नमस्ते, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और बोला। आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम में और आप देख रहे हैं फिजी इन फोकस। मैं हूँ आपके होस्ट सेरा शर्मा। हम इस प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं फ्रॉम अनसीडेड टेरिटरीज ऑफ स्क्वामिश, सिल्वरटूथ एंड मस्कियम नेशंस। हैप्पी महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि के दिनों में लोग घरों में और मंदिरों में शिव का पूजा करते हैं और शिव भगवान को काफ़ी ब्लेसिंग्स मिलती है। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि है। ओम नमः शिवाय। Pink Shirt Day is on February 22nd. This day is also known as Anti-Bullying Day in 2012. The United Nations declared February 22nd as Anti-Bullying Day, and now the last Wednesday of February in Canada is National Pink Shirt or Anti-Bullying Day. Many countries now recognize specific days for raising awareness about the prevention of bullying and promoting kindness and inclusion. आप सभी का फ़ोन कॉल्स और फीडबैक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. Let's take a short break and hear from our sponsors. I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard-earned money on rent. Vic Prasad can make you a homeowner. Get pre-approved services provided to first-time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vic Prasad now on 604-306-6647. Vic Prasad is associated with Craft Mortgages Canada Incorporated. For any kind of visa-related services, contact Milky Way Immigration, a galaxy of opportunities located at Unit 209-9547 152 Street, Surrey, BC. They have licensed immigration consultants, placement officers, and LMIA experts to meet your immigration and recruitment needs. Book one-time free consultation either on Facebook or by calling 604-396-0005. Arvind's Curry and Cocktail, Indian cuisine. They do catering for all occasions and they do free delivery. Please call 604-515-1070. Address is 420 6th Street, New Westminster. Open 7 days a week from 11 a.m. to 9 p.m. For deliveries, call 604-515-1070 or arvindscurry.com. Bollywood Banquet Hall and Conference Center, located at Pile Business Center at 201-8166 128th Street in Surrey. No celebration is too small to accommodate you. They have newly renovated 2 halls to serve you, up to 1,000 guest capacity, top-notch chefs to delight you with delectable and heavenly cuisine. So just call Bollywood Banquet Hall at 604-598-2700 for your events. Benisi Mobile Detailing Services. They offer commercial trucks, cars, SUV, boats, bikes, RVs, and much more. Just give them a call at 778-808-2859. Just give them a call at 778-808-2859 and they will do all kind of services at your home. Thank you sponsors for support. अब हमारे साथ पूरे हफ्ते भर फिजी न्यूज़ के लेकर आ गए हैं विक प्रसाद जी। नमस्कार, फिजी इन फोकस में आपका स्वागत है। यह कार्यक्रम वैनकूवर कनाडा से प्रसारित हो रहा है। फिजी न्यूज़ के साथ मैं हूं विक प्रसाद। अटॉर्नी जनरल और मिनिस्टर फॉर जस्टिस सिरोमी तुरंगा ने फिजी करेक्शन सर्विस के एक्टिंग कमिश्नर सालोते पानापासा से उस पॉलिसी को हटाने का अनुरोध किया है जहां महिला अधिकारियों का एम्प्लॉयमेंट गर्भवती होने पर समाप्त कर दिया जाता है। फिजी करेक्शन सर्विस के अपने दौरे पर बात करते हुए तुरंगा का कहना है कि उन्हें महिला कर्मचारियों के साथ संस्था की नीति के बारे में बताया गया क्योंकि वो भेदपूर्ण है। उन्होंने यह भी सवाल किया है कि यह नीति क्यों लागू की गई और कहां से आया है। अटॉर्नी जनरल का कहना है कि सरकार की नज़र में यह गलत है कि जब कोई महिला अधिकारी गर्भवती हो जाती है तो उसका रोजगार समाप्त कर दिया जाता है। वो कहते हैं कि जब ऐसा होता है तो महिला अधिकारी अपने जीवन यापन के मुख्य स्रोत से हाथ धो बैठती है। तुरंगा ने एक्टिंग कमिश्नर ऑफ फिजी करेक्शन सर्विस से उन महिलाओं को वापस रेइंस्टेट करने का अनुरोध किया है जिन्हें इस पॉलिसी के कारण हटा दिया गया था। पुलिस वर्तमान में नंबुआ में एक 14 वर्षीय छात्र की कथित आत्महत्या के मामले की जांच कर रही है। इसकी पुष्टि पुलिस स्पोक्समैन आना नैसोरो ने किया था। इस बीच इस साल 1 जनवरी से 2 फरवरी तक फिजी पुलिस क्राइम स्टैटिस्टिक्स यूनिट द्वारा आत्महत्या के 11 मामले और आत्महत्या के प्रयास के मामले 8 दर्ज हुए हैं। यह पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 19% की वृद्धि है। 100 साल पुराने CWM हॉस्पिटल को मरम्मत के काम से सख्त जरूरत है।
जिसमें कई खिड़कियां और मस्कीटो स्क्रीन्स टूटी हुई है। कई वॉशरूम्स में प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल काम की बहुत ज़रूरत है। सीलिंग फैंस टूटे हुए हैं, लिफ्ट काम नहीं कर रही है और एयर कंडीशनिंग यूनिट्स काम भी नहीं कर रही है। उम्मीद है कि यह लगभग 3 महीने में ठीक हो जाएगी। मीडिया को चिल्ड्रंस वार्ड, मैटरनिटी वार्ड और किचन के दौरे पर खुद देखने के लिए आमंत्रित किया गया था कि देश के प्रमुख अस्पताल की क्या स्थिति है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर लुकेना सेंड्रा का कहना है कि उनके पास लगभग 100 प्राथमिकता वाले एरियाज की एक लिस्ट है जो बोर्ड ऑफ विजिटर्स को माध्यम से उनके पार्टनर्स को दी गई थी। उनका कहना है कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे इसे ठीक करने के लिए 3 महीने का समय सीमा तय कर रहे हैं। अस्पताल के कर्मचारियों ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि कुछ मुद्दे प्री कोविड के हैं और एक सवाल का जवाब देते हुए इसकी मरम्मत पहले क्यों नहीं की गई। चीफ मेडिकल एडवाइजर डॉक्टर जेमिसा ट्रिंड्रावू का कहना है कि जब विकास की बात आती है तो वे सुविधा को देखते हैं और सरकार की प्रायोरिटी को देखते हैं। उनका कहना है कि पिछले कुछ वर्ष में प्रायोरिटी सुनिश्चित करने के लिए रही है और उनके पास खरीद प्रणाली की व्यवस्थित किया गया था, लेकिन अब जब हमारे पास नई प्राथमिकताओं वाली नई सरकार है तो वे खुश है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर सुधार को देख रही है। ऑपोजिशन लीडर वोरंगी बैनिमरामा ने शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे मोनिकाओ रोड स्थित गवर्नमेंट रेसिडेंस को खाली कर दिया है। एक्टिंग परमानेंट सेक्रेटरी एट द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस पीटर वाइस का कहना है कि बैनिमरामा ने मोनिकाओ रेसिडेंस के चाबियां सौंप दी है और रातू सुकुना रोड पर ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर रेसिडेंस जो था उसको भी खाली कर दिया है। वो एक अन्य सरकारी क्वार्टर्स में चले गए हैं जहां वो मार्केट रेंट पे कर रहे हैं। रंबुका पिछले साल 24 दिसंबर को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद नमंदी हाइट्स में अपने प्राइवेट रेसिडेंस में रह रहे थे। यूनिवर्सिटी ऑफ द साउथ पैसिफिक वाइस चांसलर और प्रोफेसर पाल अलुवालिया, जिन्हें पिछले सरकार ने फिजी से बाहर कर दिया था, आज सुबह देश वापस पहुंचे। वह अपनी पत्नी सैंड्रा प्राइस के साथ सामुआ से नांदी पहुंचे। प्रोफेसर अलुवालिया ने इसकी अनुमति देने के लिए ईश्वर और नई फिजी सरकार को धन्यवाद दिया है। प्रधानमंत्री सितिवेनी रंबुका ने पिछले साल दिसंबर में प्रोफेसर अलुवालिया के लिए प्रतिबंध जो था वो हटा दिया, जहां उन्होंने कहा था कि वो व्यक्तिगत रूप से प्रोफेसर से मिलने के लिए तैयार है और फिजी के लोगों की ओर से उनके साथ किए गए व्यवहार के लिए माफी मांगेंगे। रंबुका ने पहले कहा था कि वे सभी शौक और गहरी शर्मिंदगी के साथ याद करते हैं कि कैसे प्रोफेसर अलुवालिया को कैंपस से उनके घर पर गेस्टापो स्टाइल नाइट रेड में देश से बाहर निकाल दिया गया था। उनका कहना है कि यह फिजी और आइलैंड नेबर्स के प्रमुख विश्वविद्यालय के प्रमुख थे जो हमारे हजारों युवाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करता है। रंबुका ने कहा कि पैसिफिक आइलैंड्स में ऐसा कभी नहीं हुआ था और यह फिजी और हमारे आइलैंड नेबर्स के लिए हानिकारक है। रंबुका का कहना है कि विश्वविद्यालय पर पिछली सरकार का दृढ़ हमला फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी अयाज सैयद कयूम के नेतृत्व के बाद में भी जारी था। आप देख रहे फिजी इन फोकस, विक प्रसाद के संग अब कुछ स्थानीय समाचार। एक वैंकूवर प्रॉपर्टी डेवलपर बेलआउट के कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं जबकि उन पर $700 मिलियन का कर्ज है और जबकि उनका 16 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स खतरे में आ गया है। कोरोमंडल प्रॉपर्टीज लिमिटेड ने इस सप्ताह बीसी सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया है और जिसमें कंपनीज क्रेडिटर्स अरेंजमेंट एक्ट के नीचे वो राहत की मांग कर रहे हैं। अगर पिटीशन सक्सेसफुल हो जाती है तो इस कंपनी को और समय मिल जाएगा अपने क्रेडिटर्स को पे करने के लिए। बढ़ती इंटरेस्ट रेट के कारण कंपनी अपनी पेमेंट्स नहीं कर पा रही है। बीसी के भूतपूर्व प्रीमियर अपने एमएलए पद से इस्तीफा दे रहे हैं। जॉन हॉगन ने पिछले सप्ताह अपने स्पीच में बताया है कि वो अगले महीने अपने एमएलए पद से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि वो 2021 डायग्नोसिस के बाद हेल्दी और कैंसर फ्री है। हॉगन एनडीपी प्रीमियर के पद पर बीसी के सबसे लंबे समय तक प्रीमियर रह चुके हैं। आप देख रहे फिजी इन फोकस, विक प्रसाद के संग अब कुछ खेलकूद के जगत की जानकारी। HSB 7 के अंतर्गत अगला टूर्नामेंट LA 7 में फरवरी 25 से 26 तक होने जा रहा है। पूल ए में न्यूजीलैंड, सामोआ, यूएसए और चिले को रखा गया है। पूल बी में साउथ अफ्रीका, आयरलैंड, यूरुग्वे और कनाडा को रखा गया है। पूल सी में फिजी, ऑस्ट्रेलिया, कीनिया और जापान को रखा गया है। पूल डी में फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, अर्जेंटीना और स्पेन को रखा गया है। वैंकूवर 7 मार्च 3 से मार्च 5 को BC प्लेस में होगा।
सुपर बोल 57 कैंसस सिटी चीफ्स और फिलाडेल्फिया ईगल्स के बीच में रविवार को हुआ। अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। विक प्रसाद को यहीं पर दीजिए इजाजत। धन्यवाद। धन्यवाद विक प्रसाद जी। अगर आपके पास भी कोई न्यूज़ और आपको न्यूज़ शेयर करना चाहते हैं तो विक को कॉल कीजिए और हमारे स्टूडियो में भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो में और ये निश्चल राम एंड सबरीना बख्श, कोच एंड पेरेंट ऑफ सरी सॉकर टीम, हैव अ लुक। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अबोला फिजी। जी हाँ दोस्तों, आप फिजी इन फोकस को देख रहे हैं और आज हमारे स्टूडियोज में ऐसे दो मेहमान को हमने यहाँ इनवाइट किया है कि दे वुड बी टॉकिंग अबाउट रेसिज्म। If you are not white skin, if you are any other skin than the white skin, even sometimes the white skin also face the racism, लेकिन ये कंट्री में हमारे साथ में हम चाहे फिजी के, चाहे युगांडा के, चाहे इंडिया के, कहीं पर किसी भी देश के हैं, we must have faced racism at some point in our life. You know, people, the stats says that if you go for a job interview, in the first 30 seconds, the employer will decide if they want to hire you or not. You may be the most qualified person, but 30 seconds is the deciding point for the employer to be hiring you. And I'm not making this up. This is the stats that came out. तो आज हम बात करने जा रहे हैं निश्चल राम, जो कि टीम कोच एंड प्रेसिडेंट ऑफ ग्रेटर वैंकूवर यूनाइटेड स्पोर्ट्स क्लब के हैं, फ्रॉम सरी, and Sabrina Butts, and she is the mom. Her son plays soccer. So, इनके साथ में क्या हुआ? We will talk and maybe we'll speak Hindi, English, or anything that we understand, right? So, Nishal, I'll start with you because you are the one that brought it to the forefront, and you are also the coach. So, talk a little bit about, give the little bit of synopsis of what has happened with your team and your players. So we were playing a League Cup game in Coquitlam, and that was 3 months ago on October the 15th. So the game was going on. First half was okay. Our team were winning, and more towards the second half, the supporters and the parents from the other team, that is the Coquitlam Metroport team, they started saying racist words which were not appropriate to the boys, and those were very derogatory. And towards the end of the game, our players, they were crying on the field. In between the game, they told the referee, and he never took any action. His excuse was, if he can't hear anything, he can't do nothing. But in the meantime, these parents and the supporters, they were yelling from the sidelines. And the referee was in ignorance of the whole incident. So, referees are volunteers, my understanding, right? They're volunteers. But is there another higher power that you can go and complain with the same district? So the referees, they are paid. Oh, they are They're paid paid. by the club. They are not volunteers Okay. like us. Coaches, most of the coaches, they are volunteers. Like Okay. me, I'm a volunteer for the club. And I'm a volunteer president as well. Okay. So I contribute my time to the community Yes. in that way. Complaint-wise, that's the reason it took us 3 months to come out and come to the media and expand on this, was because we took the approach which we are supposed to take, that is through BC Soccer. And they took 3 months and nothing was done, which is very heartbreaking as a coach, as a parent, and as a president of our club. Sabrina, you talk a little bit about how was your son is playing on the same team when you were playing in Coquitlam. So what was your experience with your son? Is it the first time he felt like this? That No. he's been targeted because of the skin color? Unfortunately, it's not the first time. But we play various communities, and we've had different experiences. Definitely out in Coquitlam and Poco area, it's been different. Where the vibe is differently
just the reaction that we get from parents, coaches, refs, it feels different, but it's never been as blatantly obvious and in our face as it was this last game in October. So unfortunately, the racism does spread across and also spread across other sports as well. So, but sitting on the sidelines, watching the frustration and seeing these kids being hurt, at the time I didn't know what was happening, just that you saw the tensions, you saw the frustration, you saw the anguish on the boys' face, and I couldn't understand. I'm like, what could be happening in this game that would make them react like that? It wasn't until the second half when one of the players was actually pulled off by the coach because of his level of frustration and hurt that the coach felt like he was no longer safe to be on the field. When he came off, I asked him and I said, what is wrong? And he yelled out very loudly, they're making racist comments. So that hurt. And in the time, watching that player come off and see that level of hurt at 16 years old, they're not ones to show their emotions, especially boys. They are, unfortunately, community is about keep your emotions tied. When it's that blatant and that in your face, to see that the other officials on the field could not see those tensions, could not see the same frustrations, I kind of question whether or not how much they were paying attention. So when that was said on the sidelines, it was very impactful from parents that we just, at that time, we need to protect these kids. And there was no mechanism to help them except for to just encourage them to go see your coach, go find a spot. And during that time, there was someone on the sidelines egging him on to go fight. And it's like, this is not what we came here to do. We came here to play a game. So that's frustrating that all along the sidelines, everyone could see the tensions, but the officials that had control over actually doing something about it claimed that they didn't. So sad, to see your children face that. And I mean, there's the sports they love. And there was a mom came here about a few weeks ago, and her son also, and it happened in Kakudlam too. Her mom also, the son played hockey. So it's not just, we are talking about racism in soccer only, it was in hockey as well. And that mom is brave enough to go and talk to the media about her experience, her son's experience playing with this all-white players or the team. We don't want to call it. We are not going to start here white and black. But when that happens, it is so sad not to acknowledge that. Where is that racism coming from? What do you want to add to that? Your experience of, because you are also president, you are also the coach. How do you talk to the children that it's an isolated case, may not happen again? We can say that this is not an isolated case, right? Our goal in the community is to create positive environment for the kids where they could come, play soccer, enjoy their time, spend that moment with the family when they come to support them at the games. And this is the last thing you want to see at the games. The parents and the players, they go through this. And I hope we bring enough awareness in the community that people understand that this is not acceptable in today's society. Yeah. Yeah, racism doesn't have no place in sports or anywhere else for that matter. But it's very unfortunate that we can see it openly happening in here. In Canada, when you look at Canada, the makeup is made up of all immigrants. People from all over the world make Canada. And the first people of this land are the Aboriginal, But it so happens that we still face racism. Or we have a thicker skin, maybe we have gone through racism, it's well and good, but now the children are facing. They never know what racism is all about. They see everybody equal. That's what the problem is, because the kids here are so different compared to the immigrants. Yeah. Immigrants coming from other countries, they've seen racism, but the children, they don't know much. And they might think this is normal, which could have long-term emotional effect on their mental development. So what would you like to say to the parents? Racism, a kid is not born racist. It's not born racist, I tell you this much. Because a kid is a kid. And I think racism comes from the parents
or the grandparents or the other people in the house, right? So this is where it starts. Oh, don't play with that guy, don't play with that. You smell curry, you smell that and all that. That's where it starts. What do you would want to say to the parents of the children that, or the parents especially, get the message out to the parents that even if they are saying something, do you know what the impact that will have on the children? What I would say is Canada is very diverse. There's so much diversity, but inclusion is the problem here. And regardless of your skin color, I think we must all learn about including other people, despite their skin color or the language they speak, because we all one. And as you said, it all starts at home. With that, I'm looking at the clock. Thank you so much for coming in. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों को हमारे स्टूडियोज में आने के लिए और ये रेसिज्म पर बात करने के लिए. जो बच्चे खेल रहे हैं, चाहे वो सॉकर खेल रहे हैं, चाहे हॉकी खेल रहे हैं, चाहे बास्केटबॉल, whatever, there's so much racism in there because sometimes we try to ignore it. कि छोड़ो, you are taking it too seriously. कोई बात नहीं. लेकिन I think the impact it will have on the children growing up, it's humongous. So I think maybe what we need to do or what lies ahead is the parents. Everything goes back to the parents. What kind of household they've been brought up. Even we talk sometimes like that. People of color can be racist as well too. But we talk about other nationality and all that. And you should not be doing that. I think March 21st is International Day of Elimination of all forms of racial discrimination. We're going to be talking about that later. For both of you, thank you so much for coming on Fiji in Focus. You're welcome. Thank you. Thank you, both of you. If you see or witness any racism, don't stay silent. Speak up. By staying silent, you are giving more power to the abuser. हमारे पास कुछ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स है. लीजिए देखिए. Please have your pen and paper ready. Make some notes here. Rugby Sevens will be at BC Place from March 3rd to 5th. There'll be over 60,000 fans, 352 players, and 28 teams playing. It will be a weekend to remember. Please join Fiji and Focus there. Reserve your seat now at tickets@canada7s.com. Bulleh Shah Academy of Canada is having Anjuman Khutam in Nebia at Multi-Faith Center on Saturday on February 25th, 2023 at 5:30 p.m. at 102-8258 120th Street in Surrey. Please join us on this sacred night along with our family and friends. Refreshments will be served. For more information, please call 604-760-0096 or 604-715-6797. Mardi Gras Gala. This is taking place on February 18th at 6 p.m. at Enville Center at 777 Columbia Street in New Westminster. It's auction and fundraiser. The theme this year is Live Without Fear, a response to the silent and horrible crime of domestic violence. Vedic Cultural Center Ramakrishna Mandir is having daily evening programs for Shiv Mahima by Pandit Chamanlal Sastri with Brahmanandan Ramayan Mandali from February 13 until February 17 from 7 p.m. to 8:30 p.m. and on February 18th Saturday until midnight. For more information, please call Bimla Veer Singh at 604-270-7672 or Mandir at 604-275-9182. हमारे पास इतना ही समय था. अब हम आपसे विदाई लेना चाहते हैं. आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस शो को देखने के लिए. हम आशा करते हैं कि आपने हमारे शो को एंजॉय किया होगा और ऐसे ही आप हमारे फिजी इन फोकस से जुड़े रहे. इस शो को आप देख सकते हैं Thursdays at 2:30 p.m. and on Sundays at 4 p.m. Vancouver time on Channel 4 and Calgary at 5 p.m. on Channel 10. आप लोग YouTube चैनल पर भी फिजी इन फोकस देख सकते हैं. प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर. एशियन पल्स टीवी 3 और शो भी दिखाते हैं on every Wednesday 2:30 p.m., Thursday at 8:30 p.m. and Saturdays at 5:30 p.m. Kamila Singh Talk Show on every Monday at 10 a.m. and on Sundays at 5:30 p.m.
Viti Vibes TV on Thursdays at 10 p.m. and on Sundays at 4:30 p.m. Please watch all our shows, like and share. अब हमारे मुलाकात होगी next week Tuesday at 10 p.m. only on Shaw. Happy Valentine's Day to you. हम आप सभी से शुक्रिया अदा करते हैं for spending our time with us and please watch and share. I'm your host Sarah Sharma. Namaste. I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard-earned money on rent. Vic Prasad can make you a homeowner. Get pre-approved services provided to first-time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vic Prasad now on 604-306-6647. Vic Prasad is associated with Craft Mortgages Canada Incorporated. For any kind of visa-related services, contact Milky Way Immigration, a galaxy of opportunities located at Unit 209-9547 152 Street, Surrey, BC. They have licensed immigration consultants, placement officers, and LMIA experts to meet your immigration and recruitment needs. Book one-time free consultation either on Facebook or by calling 604-396-0005. Arvind's Curry and Cocktail, Indian cuisine. They do catering for all occasions and they do free delivery. Please call 604-515-1070. Address is 420 6th Street, New Westminster. Open 7 days a week from 11 a.m. to 9 p.m. For deliveries, call 604-515-1070 or arvindscurry.com. Bollywood Banquet Hall and Conference Center located at Pile Business Center at 201-8166 128th Street in Surrey. No celebration is too small to accommodate you. They have newly renovated 2 halls to serve you, up to 1,000 guest capacity, top-notch chefs to delight you with delectable and heavenly cuisine. So just call Bollywood Banquet Hall at 604-598-2700 for your events. Benisi Mobile Detailing Services. They offer commercial trucks, cars, SUV, boats, bikes, RVs, and much more. Just give them a call at 778-808-2859. Just give them a call at 778-808-2859 and they will do all kind of services at your home.